Hi kids, we are starting a new chapter number 6, Metropolitan Cities of India from the book Social Science 3. These are the learning objectives: Delhi, the heart of India, then Chennai, the city of temples, Mumbai, the gateway of India, and Kolkata, the city of joy. Okay. So, metropolitan cities in India are regarded as vital economical, cultural, and political centers. Further, the metropolitan cities in the country are also considered as the crucial hub for regional and communications. Let us know details about the metropolitan cities of India. So, जो metropolitan cities हैं इंडिया में वो बहुत ज़्यादा vital मानी जाती है in the terms of economical, cultural and political terms. Okay. जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं हमारी कंट्री की, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल मानी जाती हैं कम्युनिकेशन एंड रीजन्स की वजह से भी. ओके, अब हम इनके बारे में इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. ओके. In India, the Census Commission defines a metropolitan city as one possessing a population of more than 40 lakh 4 million. The metropolitan cities in India are Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Ahmedabad and Pune. But Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai are the main metropolitan cities of India. सो इंडिया में सेंसस कमीशन उनको मेट्रोपॉलिटन सिटीज कहते हैं जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 40 लाख, सो 4 मिलियन. ओके. एंड जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं इंडिया में वो है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद. ओके. बट जो मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं दोज आर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई. ओके. Now, first we'll talk about Delhi, the heart of India. Delhi is the capital of India. It is an amalgam of the ancient and the modern times. It is a major gateway of India. It is one of the busiest entry points for overseas airlines and is on the overland route access across Asia. तो जो दिल्ली है ये कैपिटल है इंडिया की, राइट. एंड ये एमलगम है एंशियंट एंड मॉडर्न टाइम्स का. एंड ये एक मेजर गेटवे है इंडिया के लिए. ये बिजिएस्ट एंट्री पॉइंट्स हैं एयरलाइंस के लिए एंड रूट के लिए एशिया में. ओके. Then we'll talk about the area and population of Delhi. Delhi is an area of about 1483 square kilometers. Its population is around 24 million or 3 crore 38 lakh 7,400 respectively. Okay, so Delhi area है इतने square kilometers में and इसकी population around 24 millions और given in words, numbers basically, properly. Okay, so this is the population. Next, Delhi is situated on the bank of river Yamuna. As a union territory, Delhi shares its border with Uttar Pradesh and Haryana. So जो दिल्ली है वो एक्चुअल में यमुना रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है एंड ये यूनियन टेरिटरी है एंड दिल्ली शेयर करती है अपने बॉर्डर्स उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा के साथ. Climate of Delhi. Delhi has extreme climate. It is very hot in summer and cold in winter. Different types of people live in Delhi. They speak Hindi, Punjabi and Haryanvi. Delhi is divided into two parts. The old Delhi was one of the capital of Muslim India between the 12th and 19th centuries. Old forts, mosques and monuments related to India's Muslim history are located here. So Delhi का जो climate है extreme है. गर्मियों में बहुत ज़्यादा hot होता है summer and winter season there is very cold. एंड डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं दिल्ली में. हिंदी स्पीक करते हैं, पंजाबी, हरियाणवी. दिल्ली बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. जो ओल्ड दिल्ली है वो कैपिटल मानी जाती है मुस्लिम इंडिया के लिए फ्रॉम दी 12th एंड 19th सेंचुरी. ओके. यहाँ पर ओल्ड फोर्ट है, मॉस्क है, मॉन्यूमेंट्स है जो कि इंडिया मुस्लिम हिस्ट्री को लोकेट करते हैं, बताते हैं उनके बारे में. ओके. In Delhi, India Gate, Jama Masjid, Red Fort, then there is Qutub Minar. New Delhi is the imperial city that was created as the capital by the British. It is spread over wide area and is lined with imposing bulwarks. So जो New Delhi एक imperial city
क्रिएट की थी ब्रिटिशर्स ने, और इसका वाइड एरिया काफी स्प्रेड हुआ है काफी ज्यादा एरिया, एंड that's it. And then we'll talk about religious places in Delhi. There are a large number of places of worship for the people of all religions in Delhi. Among these places are Birla Mandir, Akshardham Temple, Lotus Temple, Gurudwara Bangla Sahib, Gurudwara Seesganj, Jama Masjid, Moti Masjid, Saint James Church, etc. So large number of places are worship के लिए, different religion के लिए दिल्ली में. सो मेजर यहाँ पर बताया जैसे बिरला मंदिर, अक्षरधाम टेम्पल, लोटस टेम्पल, गुरुद्वारा सीसगंज, जामा मस्जिद एंड सेंट जेम्स चर्च एंड मेनी अदर. ओके, see the picture as well. This is the picture of Akshardham temple, then this is the picture of Gurudwara Bangla Sahib, then this one is Jama Masjid, and this one is Saint James Church. Okay, Mumbai, the gateway of India. Mumbai is the capital of Maharashtra. It is earlier known as Bombay. It is situated on the west coast of India. It faces the Arabian Sea. Earlier, Mumbai was a group of 7 islands. They are now connected to the main part of the city by bridges. So Mumbai जो है एक्चुअल में कैपिटल है महाराष्ट्र की, एंड इसे हम पहले बॉम्बे कहते थे, एंड ये सिचुएटेड है वेस्ट कोस्ट इंडिया के, एंड ये अरेबियन सी को फेस करता है. जो मुंबई है ये एक्चुअल में का ग्रुप था पहले, तो कनेक्ट कर दिया गया है वाया ब्रिजेस. देन नेक्स्ट इज एरिया, पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट. Mumbai has an area of about 603 square kilometers. Its population is about 16,73,000 crore. The climate of Mumbai is warm and humid almost throughout the year. It gets heavy rains during the months of June, July and August. So Mumbai का area this much and population is this much. एंड जो क्लाइमेट है मुंबई का ज्यादातर वार्म एंड ह्यूमिड रहता है पूरे ईयर में, एंड यहाँ पर बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल हमें देखने जून, जुलाई एंड अगस्त में. ओके, industry of Mumbai. Mumbai is one of the most important industrial centers of India. It is famous for textile industries. Some industries make medicines, oils, chemicals and electronic goods. Mineral oil is found in the seabed near the Mumbai coast. This place is called Mumbai High. Oil is found here and is refined in a refinery. So जो मुंबई है ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर है इंडिया के लिए, एंड ये फेमस है टेक्सटाइल के लिए मेनली, एंड यहाँ पर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज है, मेडिसिन, ऑयल, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. जो मिनरल ऑयल है यहाँ पर सीबेड में हमें मिलते हैं, एंड इस प्लेस को मुंबई हाई कहते हैं. ऑयल यहाँ पर मिलते हैं एंड रिफाइन होते हैं रिफाइनरीज में. Then people from different parts of India live in Mumbai. Mostly English, Hindi, Marathi and Konkani languages are spoken in Mumbai. Mumbai is famous for Indian film industry known as Bollywood. Mumbai Stock Exchange and is referred to as the commercial capital of India. Mumbai is famous for 2 snacks, pav bhaji and bhel puri. सो यहाँ पर अभी फर्दर हमें मुंबई के बारे में बता रहे हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से मुंबई में बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कोंकणी लैंग्वेजेस को स्पीक करते हैं. मुंबई फेमस है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जिसको हम बॉलीवुड कहते हैं उनके लिए, एंड जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है इसको हम कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं. मुंबई 2 स्नैक्स के लिए फेमस है, पाव भाजी एंड भेलपूरी. ओके, Srikhand, a sweet dish, is also very famous among the people of Mumbai. Ganesh Chaturthi is the main festival of Mumbai. Gateway of India is the most famous landmark in Mumbai. So Srikhand एक sweet dish होती है, वो भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा famous है, and गणेश चतुर्थी वहाँ का main festival है. Okay, and जो famous landmark है मुंबई में, that is Gateway of India. Okay, and next we'll talk about Chennai, the city of temples. Chennai is the 4th largest metropolitan city of India and capital city of the Indian state Tamil Nadu. It was earlier known as Madras. It is located on the southeast coast of India facing the Bay of Bengal. So जो चेन्नई है that is the 4th largest metropolitan city
ऑफ इंडिया एंड ये कैपिटल सिटी भी है तमिलनाडु की। इसको अर्लियर हम मद्रास कहते थे एंड ये लोकेटेड है साउथ ईस्ट कोस्ट में इंडिया के, जो कि फेस करता है बे ऑफ बंगाल को। Location area and population, Chennai city is divided into two parts. The old city is known as Georgetown, lies in northern part of the city. The other part is towards the south of the Georgetown. Anna Salai is the main road passing through this part of the city. Chennai has an area of about 187 square kilometer. Its population is around 1 crore 20 lakh 53,700. The climate of Chennai is warm throughout the year, thus people wear cotton clothes. Tamil language is spoken here. English is also spoken widely. So चेन्नई जो सिटी एक्चुअल में टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओल्ड सिटी उसको जॉर्ज टाउन कहते हैं एंड ये नॉर्दर्न पार्ट में लाई करता है सिटी के, एंड जो अदर पार्ट है वो साउथ में लाई करता है जॉर्ज टाउन के। जो अन्ना सलाई है ये मेन रोड है, पास करती है सिटी में। एंड जो चेन्नई है इसमें अबाउट दिस मच एरिया है एंड पॉपुलेशन इज दिस मच। जो क्लाइमेट है चेन्नई का वार्म रहता है पूरे ईयर में, इसलिए जो लोग है कॉटन क्लोथ्स वेयर करते हैं। तमिल लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस देयर। And next we'll talk about the food and festivals of Chennai. Rice is the main food. It is eaten with sambar, rasam and curd. Idli, dosa, vada and uttapam are also popular snacks. जो rice है वो main food है, सांभर रसम एंड कर्ड के साथ ईट करते हैं, एंड जो इडली डोसा वड़ा उत्तपम है ये भी पॉपुलर स्नैक्स है। ओके, all the main Indian festivals are celebrated in Chennai, but Pongal is the most important festival of Chennai. Bharatnatyam is the famous dance of Chennai. Chennai is famous for its music, art and weaving and designing of cloth. So जो मेन इंडियन फेस्टिवल्स हैं सारे सेलिब्रेट किए जाते हैं चेन्नई में, बट पोंगल इज द मेन फेस्टिवल ऑफ चेन्नई। भरतनाट्यम यहाँ का फेमस डांस है एंड चेन्नई फेमस है बेसिकली अपने म्यूजिक, आर्ट, वीविंग एंड के लिए। ओके, next we have tourist places of Chennai. Chennai has many tourist places. The main attraction of the city is Marina Beach. It is the second longest beach in the world. War Memorial, Gandhi Mandapam, Fort St. George, Government Museum, Vivekanand Museum, Gandhi Snake Park, Kalpeshwar Temple and Parthsarthi Temple are the other tourist places of Chennai. There is a large film industry in Chennai. Many Tamil films are produced by this film industry. So जो चेन्नई है ये टूरिस्ट प्लेसेस भी है। यहाँ पर मेन जो अट्रैक्शन है सिटी की दैट इज मरीना बीच, एंड जो सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच है पूरे वर्ल्ड में। देन यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेसेस है जैसे वॉर मेमोरियल, गांधी मंडपम, देन देयर इज गवर्नमेंट म्यूजियम, विवेकानंद म्यूजियम एंड कल्पेश्वर टेम्पल एंड मैनी अदर। ओके, देन यहाँ पर एक लार्ज फिल्म इंडस्ट्री भी है चेन्नई में जो कि तमिल फिल्म्स प्रोड्यूस करती है। ओके, talk about Kolkata, the city of joy. Kolkata, the capital of West Bengal, is India's third most populous metropolitan city of India. Kolkata was founded in 1960 by the British East India Company. It became the center of British power in India in 1773. It is situated on the eastern bank of the Hooghly River. It is the major business, commercial and financial hub of eastern India and also of the northeastern states. Kolkata was a prime center of the Indian freedom struggle and still acts as a major hub for modern day state politics. तो जो कोलकाता है ये है कैपिटल वेस्ट बंगाल की एंड इंडिया की थर्ड मोस्ट पॉपुलस सिटी है। कोलकाता 1960 में फाउंड की गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फाउंड किया था एंड ये बनी थी सेंटर ऑफ ब्रिटिश पावर इंडिया में 1773 में। ये सिचुएटेड है ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ हुगली रिवर एंड मेजर बिजनेस, कमर्शियल, फाइनेंशियल हब ईस्टर्न इंडिया के, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के यहाँ पर होते हैं। जो कोलकाता है ये प्राइम सेंटर है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का एंड ये मेजर हब की तरह आज के टाइम में भी काम करता है। ओके, एरिया एंड पॉपुलेशन. Kolkata has an area of about 185 square kilometer. Its population is around 1 crore 55 lakh 70,800 lakhs. The climate of Kolkata is neither very hot nor very cold, being
very close. The Bay of Bengal, it has a moderate climate most of the year. The people of Kolkata speak Bengali language. English and Hindi are also widely spoken. सो कोलकाता का एरिया दिस मच है एंड यहाँ की पॉपुलेशन इज दिस मच एंड जो क्लाइमेट है कोलकाता का वो ज़्यादा ना गर्म होता है ना ठंडा होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लोज है बे ऑफ बंगाल के. यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट रहता है पूरे ईयर में एंड जो ज़्यादातर लोग हैं कोलकाता के वो बंगाली लैंग्वेज स्पीक करते हैं एंड इंग्लिश हिंदी भी यहाँ पर प्रोमिनेंट लैंग्वेज है जो स्पोक की जाती है. नेक्स्ट इज मेन इंडस्ट्रीज. Important industrial city, jute, silk, rice, paper and chemicals are some important industries. Kolkata एक important industrial city है. These are the things, jute, silk, rice, paper, chemicals. यहाँ पर इन सब की important industry setup है. Okay. Festivals and religious places of Kolkata. Many festivals are celebrated in Kolkata, but Durga Puja is most important festival of Kolkata. Kali Ghat Temple, Birla Mandir, Khan Khania, Kalibari, Belur Math Temple, Parasnath Jain Temple, Nakhodo Mosque, Saint Paul's Church, Saint John's Church, Armenian Church are the religious places of Kolkata. So काफ़ी सारे फेस्टिवल्स कोलकाता में सेलिब्रेट किया जाता है बट जो सबसे ह्यूज तरीके से बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है मींस द प्रोमिनेंट फेस्टिवल ऑफ कोलकाता इज़ दुर्गा पूजा एंड यहाँ पर कुछ रिलीजियस प्लेसेस भी है जैसे काली घाट टेम्पल, बिरला मंदिर एंड देन देयर इज पारसनाथ जैन टेम्पल एंड many church are also there, Saint John's Church, Armenian Church. Okay. Then people of Bengal may eat rice and fish. They are also fond of sweets. The Rasgulla is a famous Bengali sweet, popular all over the world. So जो लोग हैं बंगाल के वो राइस एंड फिश ईट करते हैं एंड वो फॉन्ड होते हैं स्वीट्स के भी. जो एक फेमस स्वीट है रसगुल्ला, वो फेमस बंगाली स्वीट है जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है. Attractions of the city are Fort William, Birla Planetarium Zoo, Rabindra Sarovar, Indian Museum, Victoria Memorial, Botanical Garden, etc. जो main attractions है city के, these are the main attraction and this is the picture of Victoria Memorial. Okay. Improving vocabulary, new words. Metropolitan cities, cities with a population more than 4 million. ऐसी सिटीज़ जिसमें पॉपुलेशन मोर देन 4 मिलियन होती है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है. एंड नेक्स्ट इज बोलवर्ड, अ वाइड स्ट्रीट इन अ टाउन और सिटी, टिपिकली वन लाइन विद ट्रीज. सो एक वाइड स्ट्रीट होती है टाउन में या सिटी में जिसमें वन लाइन में ट्रीज लगे होते हैं. ओके, विच इज कॉल्ड बोलवर्ड. Let's recall metropolitan cities in India are regarded as vital economic, cultural and पॉलिटिकल सेंटर्स. जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है इंडिया की उनको हम वाइटल इकोनॉमिकल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल सेंटर्स कंसिडर करते हैं. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई आर द मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया. जो ये सारी हैं, दीज आर द मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया. देन दिल्ली इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया. ओके, दिल्ली कैपिटल सिटी है इंडिया की. And then Mumbai is capital of Maharashtra, earlier known as Bombay. मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र की जिसको हम बॉम्बे भी कहते हैं. चेन्नई is the fourth largest metropolitan city of India. चेन्नई fourth largest metropolitan city है. Then Kolkata is the capital of West Bengal and situated on the eastern bank of river Hooghly. Kolkata capital है West Bengal की and it is situated on eastern bank of river Hooghly. Exercise problem solving. A, take the correct option. First, Delhi is situated along the bank of the river dash. A, Ganga, B, Saraswati, C, Yamuna. Answer is Yamuna. Then second, Akshardham temple is in dash. A, Mumbai, B, Delhi, C, Kolkata. Answer is Delhi. And third, Mumbai is famous for Indian film industry known as dash. A, Bollywood, B, Hollywood, C, Mollywood. Answer is Bollywood. Then fourth, which is the most famous classical dance of Chennai. A, Kuchipudi, B, Bharatnatyam, C, Kathakali. Answer is Bharatnatyam.
Then fifth, which is the most famous festival of Chennai, A. Onam, B. Baisakhi, C. Pongal. Answer is Pongal. People of Kolkata speak dash language, A. Bengali, B. Marathi, C. Punjabi. Answer is Bengali. B. Fill in the blanks. First, there are around dash metropolitan cities in India. 4. Delhi has an area about dash square kilometers. Answer is 1483. Third, people live in Delhi speak dash dash and dash languages. Answer is Hindi, Punjabi and Haryanvi. Earlier, Mumbai was a group of dash islands. Answer is 7 islands. Dash is the language of Chennai. Answer is Tamil. Right, true or false for the following. First, the old Delhi was one of the capitals of Muslims. True. Second, people live in Mumbai speak Spanish language. False. Mumbai is famous for Indian film industry. True. Earlier known as Madras. True. Rasgulla is a famous sweet dish of Mumbai. False. Bengali is the main language of people live in Kolkata. True. We match the following. First, Delhi, the capital of India, first with fourth one. Then second, Pongal. Pongal is the most important festival of Tamil Nadu, second with fifth. Then third, Ganesh Chaturthi is the main festival of Mumbai, third with sixth. Then fourth, Durga Puja is the main festival of Kolkata, fourth with third. Then fifth, Sambar and rice, mostly eaten in Chennai, fifth with first one. And sixth, Rasgulla is a famous sweet dish of Kolkata, sixth with second one. Writing skill E. Write about each of the following in short. First, area and population of Delhi. So the area of Delhi is about 1483 square kilometers and the population of Delhi is about 1.9 crore. Okay, you can write this answer by yourself. Then second, tourist places of Mumbai. Tourist places of Mumbai include Marina Drive, Juhu Beach and Gateway of India. Then third one, main attractions of Chennai. Main attractions in Chennai are the government museum and then there is Kapaleshwar temple and these are the main tourist attraction. You can write this answer by yourself. Then fourth, religious places of Kolkata. These places include basically St. John's Church and St. Paul's Church and Kali Ghat Temple. These are the main religious places in Kolkata. This one as well you can write it by yourself. Then next we have F. Answer the following questions. First, write a short note about Delhi. Delhi is the capital city of India and it is famous for its rich history, monument and the government buildings. Okay. Then second, write about the climate of Mumbai. The climate of Mumbai is very hot and humid and it rains very much during the monsoon season. And third, write about some places of tourist interest in Kolkata. So some places of tourist interest in Kolkata are Indian Museum. Then there is Kali Ghat Temple and Victoria Memorial, Howrah Bridge. These are the main tourist attraction. Okay. Then fourth, what is the main festival celebrated in Chennai? When is it celebrated? The main festival celebrated in Chennai is Pongal. It is celebrated in January. And fifth, write some historical places situated in Delhi. Some historical places situated in Delhi are Red Fort, India Gate, Humayun's Tomb, Jama Masjid. These are the main historical places in Delhi. Okay.
Then next is creative learning, creative skill. Write some details about the metropolitan cities of India. So there is a table given and we have to fill these details about the different cities given. Okay, so we have 4 columns: name of city, area and population, popular dance and language. Under name of city we have given the different name of cities: Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai. So first we'll write about Delhi. Delhi area is about 483 square kilometer and population is 1.9 crore. CR means crore. Okay, and popular dance form in Delhi is Kathak. And the language in mostly people speak in Delhi is Hindi. Okay. Similarly, you can fill in the remaining ones by yourself. Okay. Then critical thinking, where these places are situated, write the name of city below each picture. तो ये जो places है कहाँ situated है picture देखने के बाद हमें लिखना है. So first is the picture of Red Fort, which is situated in Delhi. Then second, this is the picture of beach, which is situated in Chennai. Then this is the picture of Victoria Memorial, which is situated in Kolkata. And the last picture is of Seaport, which is situated in Mumbai. Then higher order thinking skill, Kolkata has a rich heritage of art forms, justify. In this question, you can write about its music, art forms, culture, dance forms. Okay, you can include these things and about the religious festival. Okay. Then next is intellectual development, life skills. With the help of your parents, prepare any dish of metropolitan cities at home: छोले भटूरे, वड़ा पाव, इडली, डोसा, etc. तो पेरेंट्स की हेल्प से डिश प्रिपेयर करनी है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की, जिनमें से छोले भटूरे हो सकते हैं या वड़ा पाव, इडली या डोसा, इनमें से प्रिपेयर करना है. ओके, so I hope kids enjoy learning with me. We'll meet in the next class. Bye bye.